हेलो बच्चों, मैं हूँ जयंती मैम और आपको पढ़ाने आई हूँ फिजिक्स। पिछले मेरा जो वीडियो था पिछला, उसमें मैंने आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड TIR, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाया था। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो इसी के बेस न्यूमेरिकल्स होंगे। सो वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स, बट न्यूमेरिकल करने से पहले यू हैव टू बी थॉरो विद द फॉर्मूला, नंबर 1। दूसरी चीज़ है, जब न्यूमेरिकल करो तो याद रखो कि मुझे कैलकुलेशन फास्ट करना है। मेथड वो यूज करना है जिससे कैलकुलेशन जल्द से जल्द हो और साइड कैलकुलेशंस कम करने हो, राइट? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल। लेट्स सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। तो देखो, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। आपको वेवलेंथ दे के रखा है कहाँ पे? द वेवलेंथ इज गिवन इन एयर, lambda is 600 nanometer. First you convert it into meter. SI unit में convert करिए 600 into 10 power minus 9 meter. Done. Is incident from air on a water surface. ही air से water surface में आ रहा है, water surface है, water surface ही air में आ रहा है। और जो wavelength आपको दी हुई है, that is in air. air में है ये. Now, refractive index of water is given to you. Water का refractive index means NWA, or you can write it as mu WA. That is given to you as 1.33. बच्चों, पॉइंट में करना न्यूमेरिकल हमेशा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसको क्या करो, कन्वर्ट कर लो फ्रैक्शन में and write it as 4/3. Write the refractive index as 4/3. The other thing which is given, nothing else is given. Find the wavelength, the frequency and the speed of light in water. ये तीनों चीजें आपको वाटर में पूछी है। So let's start with wavelength. पहली चीज क्या फाइंड आउट करनी है? wavelength. एयर में wavelength मुझे पता है, that is 600 नैनोमीटर, और आपको मीडियम में फाइंड आउट करना है। You have to find out in the medium. So we know that refractive index, आप याद करो कि क्या चीज चेंज होती थी? wavelength चेंज होता था, velocity चेंज होती थी, क्या चेंज नहीं होता था? frequency never changes. तो यहाँ पे wavelength हमें दिया हुआ है 600 नैनोमीटर का। यहाँ पे वेलोसिटी एयर की 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम एयर में वेलोसिटी नियरली कितनी होती है? 3 × 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ मीडियम में वेवलेंथ चेंज होगा, यहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू रिमेन व्हाट? सेम। बस इतना ध्यान रखो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, द वेवलेंथ वी हैव टू फाइंड आउट इन मीडियम. So use the formula that the refractive index is equal to wavelength in vacuum or wavelength in air divided by wavelength in medium. Use this. So wavelength in medium will come out as lambda A/n या फिर mu, जो भी लिख रहे हो। Air में आपको wavelength दिया हुआ है, so lambda m will come out as 600 into 10 to the power minus 9 divided by the refractive index is 4/3. Use this. So 4/3 जैसे use किया, 3 will go up. So wavelength and medium will come out as, this will be your 3/4, 3 into 600 into 10 power minus 9 divided by 4. Right? If you want to cut first, आप cut कर लो, फिर multiply करो, or you can multiply first and then divide. So if you multiply, this will come out as 18 with 2 zeros into 10 power minus 9 by 4. Divide it now. If you divide it, this will go by 4 times. 4 times 16, then 5, then 0 into 10 power minus 9. This is a meter. Write it in nanometer. A nanometer will be 450 nanometer. If you remember, the wavelength is always going to decrease in denser medium. तो पहला पार्ट हो गया. Now comes frequency. आपको frequency पूछिए, तो बच्चों frequency चाहे air में हो, चाहे medium में हो, frequency is not going to change. तो अगर frequency change नहीं होती है, तो आप फ्रीक्वेंसी एयर में ही कर लीजिए। आपको पता है कि V is equal to न्यू लैम्डा, तो न्यू विल कम आउट एज व्हाट? V by लैम्डा। करेक्ट? V कौन सी वेलोसिटी है? वेलोसिटी इन एयर, दैट इज C, एंड दिस इज योर लैम्डा एयर। करेक्ट? सो द फ्रीक्वेंसी विल कम आउट एज, वेलोसिटी इज 3 × 10 power 8 एंड द लैम्डा इन एयर इज हाउ मच? दैट इज 600 नैनोमीटर, 610 power minus 9। इस पावर को ऊपर ले जाइए, this frequency will come out as 3 into 10 to the power 9 and 8, that is 17 divided by 600. मोस्टली बच्चों फ्रीक्वेंसी को 10 पावर 14 में रखा जाता है, बिकॉज दैट इज द रेंज इन विजिबल लाइट। तो 14 में रख सकते हो, आप 15 में भी रख सकते हो।
14 में रखो तो इसके 3 जीरो इसको दे दो. Give 3 zeros to this tree. तो अगर आप 3 0 दे दोगे, this will be 3000 and this will become what? 10 to the power 14. That's the best way to do. 3 0 इसको दे दो, ये खुद क्या बन गया? 10 to the power 14. Down में क्या है? 600. Now you got, this will go with this and the frequency will come out as 5 into 10 to the power 14 hertz. Always write the unit when you write the value. So frequency we have got. Frequency चाहे air में हो, चाहे medium में हो, that's going to remain same. Now comes the last, that is speed of refracted light in medium. आपको यहाँ पे जब ये refract हुआ है तो यहाँ पे speed निकालनी है. Again, you know the speed is going to reduce. And you formula, what's that formula? That refractive index is equal to velocity in air to the velocity in medium. So you have to find out this velocity as the refractive index of what? Water. So you know that the velocity in medium will come out as C by N. C की value हमें पता है 3 into 10 power 8 and the refractive index of water with respect to air we know it's 4 by 3. So the velocity in medium will come out as, इसको ऊपर ले जाइए, 9 by 4 into 10 power 8. So the velocity in medium will come out as, divide it. If you divide it, we'll get it as what? This is your 2, divide 2.25 into 10 power 8 meter per second. Definitely the velocity has reduced. So we have done all the three parts. We have got wavelength, frequency and the velocity. Now you see the next question. Next question देखिए. For the same value of the angle of incidence की value same है. The angle of refraction in three medium are 15, 25 and 35. Angle of refraction 3 है, 15 degree, 25 degree, 35 degree. Now, in which medium would the velocity of light be minimum? किस medium में velocity minimum होगी? और medium कौन कौन से हमारे? A, B and C. Correct? और क्या चीज same है? Angle of incidence. So we just write it कि angle of incidence I is same for all. तीनों के लिए angle of incidence same है. तीनों medium कौन से हैं? A, एक B और तीसरा C. Right? अब देखो तीनों medium में आपको ये बताना सबसे कम velocity किसमें है. And we can use what? ये देखो तीनों के तीनों मीडिया जो है ना, there are three different media. So we can use what? The Snell's law. Snell's law को use करते हैं. So we know that Snell's law n is equal to is sin I by sin r. This we know. और दूसरा फॉर्मूला मुझे ये भी पता है कि n is equal to what? T by v. ये भी तो पता है. अब क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करते हैं. Now we see that what we are going to get, that sin I by sin r is equal to what? Is equal to C by V. Correct? What is same in all the three? I is same. I is same. Cut करते हैं. Velocity C is also same. In medium, in vacuum, it is same. So C is same. And now we see that V is definitely proportional to what? Sin R. Sin R के proportional है. Right? Now you see R मेरा कितने कितने angle का है? ABC में angle है इसका 15 degree. इसका कितना है? 25 degree. And the third is 35 degree. ये तीन angle दिए हुए हैं. Correct? 15, 25, 35. Now you put sin R. If I write sin R, this is sin 15. This is what? This is sin 25 and this is sin 35. सब बच्चों को पता है कि एंगल ऑफ साइन का जो एंगल होता है एंगल के साथ साथ बढ़ता है. मतलब सबसे कम sin 15 होगा और सबसे ज्यादा sin 35 होगा. Now you see one thing, क्या sin R और V आपस में प्रोपोर्शनल है? तो डेफिनेटली ये जो है मीडियम ए का है तो इसकी वेलोसिटी VA must be less than what? Velocity of VB must be less than what? Velocity of in medium C. Therefore, what they have asked you, in which medium would the velocity of light be minimum? So 100%, the velocity of light is least and minimum in the medium A. कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चे. रीजनिंग टाइप क्वेश्चन अगर आते हैं 1 मार्क के, MCQ में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, एज वेल एज न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं. कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला देखो क्या कॉमन है, उसको कट कर लिया मैंने. V is proportional to sin R आ गया, उसके बाद हमको समझ में आ गया sin 15 A के लिए सबसे कम है, तो यहीं पे वेलोसिटी भी कैसी होगी? कम होगी. Right? So next, we do the next question. The next numerical is, a ray of light is traveling in water, is incident on the water glass interface. Water is incident on water glass interface at 30 degrees. You have to find out the angle of refraction.
पहली चीज देखो बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है लेकिन वाटर ग्लास इंटरफेस है. दैट मीन्स इफ दिस इज ग्लास, ये ग्लास है, इसके ऊपर वाटर है, इसका मतलब दिस वाटर. So this is a water glass interface, right? And the rays incident in the water glass interface like this. And the angle of incidence is given to you at 30 degree. This is 30 degree. Correct. Now what will happen? This ray is coming from rarer to denser medium because glass is definitely denser. So it's going to be the normal. Normal की तरफ bend हो जाएगा. And what they're asking you, find the angle of refraction. और पूछा क्या है? Angle of refraction means R. Correct? But this is a water glass interface. Therefore, you have to take what? NGW, जो कि मैंने पहले सिखा दिया आपको मेरे पिछले वीडियो में, that you have to find out NGW. कैसे करते हैं? W को एक बार छुपाओ और air रखो. That means it will be your NGA. उसके बाद G को आप छुपाइए. This will be your NWA. This will be NWA. NWA. Put the values. NGW will be your, NG is how much? 3 by 2. NW is how much? 4 by 3. So you are going to get NGW as 9 by 8. सबसे पहला काम है NGW को निकाल लेना. उसके बाद क्या लगाओगे? Snell's law. I is given, R is given, so right. Sin I by sin R is equal to what? NGW. Because you have to find this value. You have already found 9 by 8. Correct? So sin I, this is sin 30. Sin R. And this NGW is 9 by 8. So very simple. Now you can find out sin R will be equal to how much? Sin R is equal to, cross multiply, this will be your 8 by 9. And this is sin 30 means what? 1 by 2. Is 8 by 9. Cross multiply 8 by 9 sin R इधर चला गया. 8 by 9 sin 30 is what? 1 by 2. So this cut it. This will be your 4. So sin R is equal to 4 by 9. अब अपने ऑप्शन देखो. अगर ऑप्शन में फ्रैक्शन में है तो आप कैसे लिखोगे इसको? R will be equal to sin inverse 4 by 9. और अगर पॉइंट भी दिया है तो सिंपली इसको डिवाइड कर दो. If you divide it, you will get what? R is equal to sin inverse. क्योंकि टेबल अभी नहीं दिया होता है. Board exam, you are not going to get the table for this. So you will write it as point what? 0.44, I think. Yes, 0.44. So this is done. So now you see the next question. The next question is a tank is filled with water to a height of 12.5 centimeter. A tank है which is filled with water. This is the tank which is filled with water up to a height of how much? 12.5. This height is 12.5 meter. Right. Now, apparent depth of a needle lying at the bottom of the ink. Apparent depth. It is the apparent depth of the needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. That means यहाँ microscope है. Right? और ये देख रहा है इसको apparent depth को. आपको ये पता है कि मैंने already सिखाया. This is the real depth of the needle. यहाँ पे है 12.5 मीटर नीचे और apparent depth कहाँ दिख रहा है? 9.4. Just note down these things. Apparent depth is 9.4. मतलब needle कहीं यहाँ दिखाई दे रहा होगा. This is the position. This is how much? 9.4. This distance is 9.4. This is your y. आपको पता है ये y है. Now what they're asking you, what is the refractive index of water? तो आपको refractive index पूछा गया. So what you are going to apply? Formula मैंने आपको सिखाया था किसमें? Real depth and apparent depth. That formula you are going to apply. And remember, the refractive index is equal to what? X by y. What is x? X is the real depth. And what is y? Y is the apparent depth. So put the values. N की value आपको find out करनी है. So n will be equal to x is how much? 12.5. So put it 12.5. What about y? Y is 9.4. Right? Now you divide it. If you divide it, just cancel this point. Divide it. 1 times it will go. 1 times it will go, then it will be point. So it will be 3. It may be 2, 3, anything. So we know that it's already 1.33. So आप इसको divide करके देखोगे तो करीबन ये 1.32 और 1.33 आएगा. Right? So we got the refractive index of water. पहला आंसर मिल गया. We got the refractive index. Now you see the second one.
What is the refractive index of water we have got? If water is replaced by a liquid of refractive index 1.63, और वाटर को रिप्लेस करके दूसरा लिक्विड डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 है, अप टू द सेम हाइट, और लिक्विड कहां तक डाला? 12.5 सेंटीमीटर तक. Then by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो कह रहा है माइक्रोस्कोप को कितना उठा दे जिससे कि उसको फोकस कर पाए. किसको? एपरेंट डेप्थ को इन केस ऑफ लिक्विड. कुछ नहीं है, आपको करना क्या होगा कि आप इसका एपरेंट डेप्थ निकाल लोगे, राइट. उसके बाद आप क्या करोगे, पहले जो एपरेंट डेप्थ था वो 9.4 था, अभी हमको देखना है कि एपरेंट डेप्थ कितना आएगा. और माइक्रोस्कोप को डिस्प्लेस करने का मतलब क्या है कि दोनों के एपरेंट डेप्थ को माइनस कर दो. वेरी सिंपल. So now you see what they are saying कि अब now instead of this water it's a liquid. अब क्या है, इसमें लिक्विड है, तो लिक्विड को फिल करते हैं इसमें. There's a liquid now. पहले क्या था? वाटर था, अभी क्या हो गया? लिक्विड, राइट. The needle is still lying here. The depth of how much? 12.5. तो आपको बोला गया माइक्रोस्कोप को कितने से शिफ्ट करें, ऊपर भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज योर एपरेंट डेप्थ नाउ, राइट. और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे हैव गिवन यू, दैट इज योर NLA, or you simply can write it as N dash, that is given as 1.63. What you'll find out? You'll find out the apparent depth. So use the formula of apparent depth. NLA is equal to X by Y dash. What is Y dash? The new apparent depth with the liquid. Correct. So X we know, NLA we know, it's 1.63. X is how much? 12.5. And we have to find out the new apparent depth, Y dash. We can easily find out Y dash. Y dash will come out as 12.5 by 1.63. Right? So see, how many times it will go? 6 times. 7 times. Yes, it can go 7 times. It goes 7 times. Then you remove just the points. Points hata do. 7 times will go, and round about it will be like 7.8. 7.8 centimeter. Now you see, this apparent depth is now, it has raised. पहले क्या था? 9.4. अभी कितना हो गया? 7.8. So this is the apparent depth now. यह apparent depth है, that is 7.8. अब आपको पूछा है कि माइक्रोस्कोप को आपने कितने से रेज किया? By what distance would the microscope have to be moved? Moved. You have raised or you have just made it down. आपको केवल ये पता लगाना है कितने हाइट से इसको आपने माइक्रोस्कोप को मूव किया है. तो क्या करोगे? डेफिनेटली ये जो नया आपका एपरेंट डेप्थ आया और ये जो एपरेंट डेप्थ पहले का था, इन दोनों को माइनस कर दो. So we'll write that the distance by which the microscope is to be moved. Microscope is to be moved. Is to be moved. Will be on Y minus Y dash. Subtract now. This is how much? 9.4. This is how much? 7.8. Subtract it. 14 and 8. That is 6. Correct? And this will be 1.6 centimeter nearly. So this is the answer. Correct? So do the next question. Then now the next question. A small ink on a paper. This kind of question is very important for your board. जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन करा है, कितने से माइक्रोस्कोप रेज किया गया, या एक स्पॉट, एक इंक डॉट है, उसके ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दिया, वो कितने से रेज होगा. These kinds of questions are very important for CPSC as well as NEET also. So see now the question. A small ink dot on a paper is viewed through a glass slab of thickness 10 centimeter. The refractive index of the glass is given 1.5. By what distance the dot appears to be raised? कितने distance से appear to be raised पूछ रहा है. That means they are asking you what? Normal shift. अभी आपको normal shift पूछा है. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो normal shift का फॉर्मूला लगा दो. अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं. Just see the question now. This is a glass slab. The thickness दिया हुआ है. The thickness of this is given as 10 centimeter. Right? And a small dot. ये dot यहाँ पे है actually. Glass slab को dot के ऊपर रख दिया है. So this is the dot. Definitely what will happen? Due to this refraction, it's going to be raised. Ink dot यहाँ कहीं दिखाई देगी. अब आपको यही पूछा है कितने से रेज हो गया. That means they are asking you the normal shift.
because you know the thickness will be the real depth and this will be your apparent depth, and they have asked you the normal shift. This is O, this is O dash. Correct? So what we do, we first find out the apparent depth without using the formula for normal shift. So पहले use करते, we know that n is equal to what? X by y. So y will be equal to what? X by n, and therefore y will be your x. X is how much? 10 centimeter. N is how much? The refractive index of what? Glass. We know that the refractive index of glass with respect to air is what? 3 by 2. Use always fraction. This refractive index of glass with respect to air. This is 3 by 2. So y will come out as 20 by 3. Divided. If you divide, you will get it as 6.66 centimeter. Right? Now you have to find out what the shift here. आपको एक shift पूछा गया है. Shift कैसे निकालोगे? E is equal to x. So simple. So D is equal to x is how much? X is 10, the real depth, and the apparent we have got. आप चाहो तो fraction में रखो या तो इसको रखो. 6.66. So the answer will come out as what? 0.33. You see, it will be 3.33 centimeter. That's going to be what? The normal shift. Isn't it simple? Yes. So now we do the next. Next numerical. Velocity of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, and that in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. मतलब कह रहा है कि glass में जो velocity, that speed, is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Right? And that in air is 3 into 10 to the power 8. There's your 2 into 10 to the power 8 meter per second. Air is, so see लेते, this is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Correct? By how much would an ink dot appear to be raised? फिर वही question है. How much an ink dot appear to be raised when covered by a glass plate of 6 centimeter thick? आपको ये बोल रहा है कि 6 centimeter thick का एक glass plate है. तो आपको ये पूछ रहा है यहाँ पे एक ink dot है, ये कितने से raise होगा? The question is same, but they have now given you the velocity in air and the velocity in glass. So first what we have to do? We have to find out the refractive index of glass with the help of these two. Right? So we know that refractive index of glass with respect to air will be your C by B. इसको use करिए. So NGA will come out as C is how much? 3 into 10 to the power 8. And this is 2 into 10 to the power 8. This will go. And NGA will come out as 3. Use this. इसी को use करिए. Don't do it in points. Now you see, they have asked you that कितने से ये raise हुआ है. That means they have again asked you, this is X, this is Y. You have to find out the normal shift. That means you have to find out Y. So Y will be equal to X by, we have used this formula, N is equal to X by Y. So Y will come out as X by N. Which N? NGA that we have found. Yes. So Y will be equal to X is how much? X is given to you as 6 centimeter. This is your 6 centimeter. So use it. This is 6. NGA is how much? 3 by 2. So this will come out as 6 into 2 by 3. So it will come out as Y is equal to 4 centimeter. आपको पूछा क्या है? By how much this raise? That means they have asked you the normal shift. So we are going to find out the normal shift. That is D is equal to X minus Y. How much is X? X is 6. So I'll put it as 6. And how much is Y? That is 4. So the normal shift will be your कितने से shift हुआ means shifted by 2 centimeter. Correct. So see, you have to remember the formula. You have to do the calculation fast or numerical आराम से हो. Correct. So the next numerical, a ray of light falls on a transparent right angle isosceles prism from a glass of refractive index √2. The refractive index is given to you as √2. Correct. And this is what a right angle isosceles prism. इस तरह के question भी बहुत important है. Now draw a ray diagram for this prism when the incident ray falls normally. आपको ये पूछा है जब incident ray fall normally करे, then you have to draw what? You have to draw the ray diagram for this. इसके लिए आपको याद क्या रखना है? जो conditions मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाई थी कि कब ये emerge करेगा,
कब ये TIR करेगा और कब ये ग्रेज करेगा। करेक्ट, वो कंडीशन फिर से याद दिलाएगी। पहले फिगर बनाते हैं। दिस इज अ राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, right angle isosceles prism. These two sides are equal. Correct. And this is having a refractiveness of √2. Nothing else is given. Draw a ray diagram for this prism when the incident ray falls normally. अब बच्चों इंसिडेंट रे इधर से भी पहुंच सकता है, इधर से भी आ सकता है, राइट, एनी साइड, इट कैन कम थ्रू एनी साइड। मान लेते हैं इधर से आ रहा है, इंसिडेंट रे इज फॉलिंग नॉर्मली, इस पे नॉर्मल गिरा। नाउ यू टेल मी व्हाट विल हैपन। क्या ये नॉर्मल गिरेगा? तो अगर क्योंकि 90 डिग्री है, क्या इट विल going to go inside because incident normally, तो ये सेकंड वाले फेज में पहुंच जाएगा, reach here. Now what you have to find out कि ये जो यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे angle of incidence कितने का? How much is this angle of incidence? This you have to find out. Correct. So now what we do, just see this is 90 degree, this is isosceles, दो साइड्स बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। This must be your 45 degree, this must also be your 45 degree. ये दोनों के दोनों कितने होंगे? 45 डिग्री के होंगे। करेक्ट। नाउ अगर ये 45 डिग्री का है तो ये 90 का है, करेक्ट, और ये 90 का है तो ये 45 का, ये 45 का है, तो क्यों आपने इसको नॉर्मल ड्रॉ किया है? तो अगर ये 45 है तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो व्हाट? 45। तो आपको ये पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का है? 45 डिग्री का है। करेक्ट। अब आपको ये देखना है कि मेरा क्रिटिकल एंगल कितना आएगा। And we know the formula. Critical angle का formula क्या था? That sin IC is equal to 1 by n, या n is equal to 1 by sin IC। बात एक ही है। तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। sin IC is equal to 1 by √2, and we know that 1 by √2 किसकी वैल्यू होती है? That is your sin 45. So this is sin 45. Sin goes and you get IC is equal to 45 degree. IC की वैल्यू भी 45 और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45। दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू व्हाट? द क्रिटिकल एंगल। I इज इक्वल टू IC। और सब बच्चों को याद है कि अगर I इज इक्वल टू IC होगा तो रे इज गोइंग टू ग्रेज अलोंग द इंटरफेस। इफ I इज IC then the ray will graze. Ray will graze. It's going to graze along the interface. That means you will draw it as this. It's going to graze along the interface. And your diagram is complete. इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में, इवन कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के बल्ब, टैंक के नीचे बल्ब वाले क्वेश्चन या फिश, ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आपको फिर से TIR लगाना है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। So now you see a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water at a depth of 80 centimeter. एक small tank है, this is a small tank. इसमें एक बल्ब रखा हुआ है, नीचे एक बल्ब चल रहा है, this is a bulb, ये बल्ब, right? Now find out the area, इसकी डेप्थ कितनी है? वाटर जहां तक फिलअप है that is of a depth of 80 centimeter. 80 सेंटीमीटर तक ये फिलअप्ड है, 80 सेंटीमीटर, correct? Find out the area of the surface through which the light from the bulb can emerge. ये light कितने area तक emerge होगा? Take the value of refractive index of water. We know this. So NW is 4/3. Right? तो पहली चीज ये समझो बच्चों कि जो लाइट जल रहा है, ऐसा नहीं होगा कि पूरे सरफेस में लाइट जलेगी। नो, इसमें होता क्या है कि फिर से वही चीज जो मैंने सिखाई थी आपको TIR में, the ray is going to go from denser to rarer medium. And therefore एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या होगा? इट्स गोइंग टू ग्रेज, और उसके आगे क्या होने वाला? TIR। तो आपको वहां तक देखना है जहां तक ये ग्रेज करेगा। अब देखो, सबसे पहले हम एक नॉर्मल ऐसा बना लेते हैं। फर्स्ट वी मेक अ नॉर्मल लाइन हियर, एक नॉर्मल लाइन बना लिया। अब हमने ये सोचा कि यहाँ पे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाते जाएं तो एक पर्टिकुलर एंगल आएगा जिसके बाद ये ग्रेज करना स्टार्ट करेगा। लेट दिस बी द एंगल आफ्टर दिस, इट्स गोइंग टू ग्रेज, यहाँ पे ग्रेज करेगा। और इससे भी ज्यादा बढ़ा दोगे तो क्या होगा? इट्स गोइंग टू डू TIR, ये TIR करेगा। सो माई लिमिटेशन इज टिल दिस ओनली, मतलब लाइट यही तक दिखाई देगी इस तरफ। सिमिलरली क्या ये लाइट स्फीयर, आप सोच रही है क्या होगा? ये 3D फिगर इमेजिन करो, क्या हर तरफ से लाइट जब जा रही है तो डेफिनेटली ऊपर जो आपको लाइट दिखाई देगी दैट्स अ पर्टिकुलर सर्कुलर एरिया। आप इधर से भी देखिए इसको, जब यहाँ से लाइट इस तरफ जाएगी तो वहीं तक रीजन तक देखना है आपको,
जहां तक TIR होगा, इसके बाद तो इक्रेज करेगी और उसके बाद क्या करने वाली है, TIR। तो आपको यही तक रीजन सोचना है, लेकिन नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक ए कोन, ये कोन की तरह है ऐसा। तो आपको ऊपर से दिखाई देगा और सर्कुलर रीजन होगा जहां लाइट दिखाई देगी। बट यू सी फ्रॉम दिस फिगर्स वेरी क्लियर कि ये जो हमारा कोनिकल चीज बन रही है उसका रेडियस कौन सा होगा, दिस विल बी द रेडियस ऑफ दिस, ये उसका रेडियस होगा, इजंट इट। और ये कैसा बनेगा ऊपर का रीजन, इट विल बी लाइक अ सर्कल, एक सर्कल की तरह होगा जिसका रेडियस क्या है, R। और पूछा गया है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना, एंड यू नो द एरिया ऑफ अ सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, इजंट इट। पहली चीज क्या है, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए मुझे रेडियस चाहिए, एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द रेडियस। रेडियस के तरीके बहुत है, लेकिन हम लोग करते हैं सबसे सिंपल तरीका क्या, अगर ये एक एंगल यहां से ग्रेज करना स्टार्ट कर दिया इसने, इट हैज स्टार्टेड ग्रेजिंग हियर, राइट, तो दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज अ क्रिटिकल एंगल, दिस एंगल इज व्हाट, द क्रिटिकल एंगल, करेक्ट। अगर ये IC है तो ये भी क्या होगा, IC। केवल एक तरफ देखो बच्चों, अगर तुम्हें पूछा होता कितने एंगल, कितना एंगल जो है जहां पे लाइट दिखाई दे रही, तो आप क्या करोगे, इसको भी IC लिखोगे, इसको भी IC लिखोगे, और एंगल पूछा है तो 2IC कर दोगे। बट नाउ दे आर आस्किंग यू द एरिया, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस, राइट। तो अब देखो ध्यान से बच्चों, ये ट्राइंगल बन गया, दिस इज द ट्राइंगल जिसमें कि ये जो चीज है वो 80 सेंटीमीटर, so I write it as 80. We have to find out R. So what we use what? ये R हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, so we can use tan. Tan IC यूज कर लेते हैं, tan IC is equal to perpendicular by base. Sorry, perpendicular is R and the base is what? The base is this. या फिर साइन से ही करते हैं, we do it with sign only. Easy करते हैं इसको, ठीक है, मेथड बहुत है इसमें, so we use sin IC. If I use sin IC, tell me what will happen. This is H, इसको H मान लेते हैं, करेक्ट। तो ये वाला क्या होगा, this will be your root R square plus H square. Hypotenuse, ये R है, ये H है, this is H, this is R, तो ये क्या हो जाएगा, R square plus H square. So I use the formula sin IC is equal to कितना होता है, perpendicular by hypotenuse, that means is R by root of R square plus H square. This we have got as sin IC. और दूसरा फॉर्मूला कौन सा जो आपने सीखा है TIR में, what is that? Sin IC is equal to 1 by N. Which N? Refractive index of water with respect to air. We put the value, the sin IC will come out as 1 by NWA. NW is how much? 1 by 4 by 3. So this will come out as sin IC will be on 3 by 4. Now you see this equation? You see this equation? You can compare. आप इन दोनों कंपेयर कर सकते हो. If you compare these two equation, R by root of R square plus H square will come out as 3 by 4. करेक्ट. सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे तो R चाहिए, H की वैल्यू मुझे 80 पता है, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं. If we square both sides, we get R square by R square plus H square is equal to 9 by 16. Correct? Cross multiply. 16R square is equal to 9R square plus H square. Then, इसको इधर ले आओ. 16R square minus 9R square is equal to H square. How much is this? This will be your 16 minus 9. It's going to give you what? 7. So, we do 7R square. 7R square is equal to H square. H की वैल्यू दी है, no need to change it in centimeter. सेंटीमीटर में चेंज, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की जरूरत यहाँ नहीं है, क्यों रेडियस भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, नो हार्म. लेकिन आप देख लोगे तुम्हारे ऑप्शन में अगर मीटर है तो यू हैव टू डू इट इन मीटर, अदरवाइज वी आर गोइंग टू यूज सेंटीमीटर. नाउ यू सी R square will come out as H square by 7. H की वैल्यू कितनी है, 80 है, so it is 80 square by 7. राइट. अब देखो मैंने चेंज कुछ नहीं किया है, मैंने स्क्वायर रूट भी नहीं लिया, क्यों, मुझे तो एरिया चाहिए. अगर मुझे एरिया चाहिए, नो नीड टू डू द स्क्वायरिंग एट द स्क्वायर रूट एंड ऑल, बिल्कुल नहीं करो. सो व्हाट यू यूज, A is equal to, you know, A is what, pi R square. क्यों करना मुझे, why will take the square root, क्योंकि R square आ चुका है. they are asking you A. now you see this is 22 by 7. R square की वैल्यू कितनी है, 80 square by 7. just you put the value, this 22, square it up, this is 6400 divided by 49.
and then you calculate the value, the answer will come out in centimeter square. You have to do the calculation because I've taken here calculative, so you have to do the calculation. Correct? So we do the next question. See now the next question. Calculate the critical angle for glass air surface if a ray of light which is incident in air on the glass surface is deviated through 15 degree. Question में change है. क्या change है देखो. अब देखो ध्यान से कि ये glass है. It's a glass. They are saying the critical angle they are asking you, that means IC they are asking you. If the ray of light which is incident in air on the glass surface, this ray of light is incident here, right? And this is deviated through 15 degree. इसका मतलब ये नहीं है कि angle of refraction है. ये तो bend हुआ है towards the normal. ये towards the normal bend हुआ है. This has bent towards the normal. But they're saying that it's deviated through 15 degree. मतलब क्या है कि अगर हम इसको पीछे ऐसे proceed करते हैं, ये तो ये deviate हो गया, मतलब इधर आ गया 15 डिग्री से. This is your 15 degree. ये 15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है. ये angle of refraction बिल्कुल नहीं है. Angle of refraction आपको find out करना पड़ेगा अभी. Then calculate the critical angle if a ray of light which is incident in air glass surface is deviated through 15 degree when the angle of incidence is given to you as 45 degree. I आपको देखे रखा है कितने का? 45 डिग्री का. That means this I is given to you as 45. हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ के उस क्वेश्चन को समझो. एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 दिया है, ये डेविएट हो गया 15 डिग्री से, तो ये 15 डिग्री है, तो आप बाहर निकाल सकते हो. आपको पता है R कितना होगा. R must be equal to what? क्या ये पूरा 45 है? So 45 minus 15 कर दो. So you are going to get R as how much? R you are going to get as 30 degree. R की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री. Let me clear this. This is your R is 45. ये पूरा कितना होगा? 45. And this is 15. So 45 minus 15 will give you what? 30 degree. 30 डिग्री दे दिया. I ऑलरेडी है, तो सबसे पहला काम क्या है? क्या सबसे पहले स्नेल्स लॉ से n निकाल लेते हैं. We are going to find out n is equal to what? Sin I by sin R. पहले आप n निकाल लो. We are going to find out n. So n will be your sin. I की वैल्यू कितनी है? 45 दी हुई है. And R की वैल्यू is how much? Sin 30 degree. So let's find n. N is equal to sin 45 is what? 1 by root 2 divided by sin 30 is how much? 1 by 2. So n will come out as, this 2 will go up, this 2 is going to go up, ये ऊपर जाएगा, this is 1 by 2, so this will be your 2 by root 2. So the refractive index will come out as root 2. पहला काम हो गया, refractive index मिल गया, और अब क्या करना है मुझे? Critical angle. So we are going to use what? TIR का formula, that sin IC is equal to 1 by n. So we use it. We use sin IC is equal to 1 by n. And therefore we can say that sin IC, n निकाल चुके थे, and was how much? Root 2. And की value root 2 निकाल चुके थे. 1 by root 2 is what? 1 by root 2 is 45. You know that sin 45. So IC is also what? IC is also 45 degree. Got the answer. So this is the answer for this question. So the next question is, see this question. This question, you see that there's a right angle isosceles prism. Go through the question. 3 rays, 1, 2, 3 of different colors fall normally on one side of an isosceles right angle prism as shown. The refractive index of the prism of these rays is, अलग-अलग ray के colors अलग-अलग हैं, तो refractive index भी different होगा, because refractive index depends upon the wavelength. I will tell you afterwards in short questions that how it depends. But as the wavelength is changing, the color of the light is changing, the refractive index is also going to change. There's a rule, there's a law called as Cauchy's theorem based on that. Okay. So now you see that 3 different rays are coming, 3 different colors are there, and सबके तीनों के rays देख रहे हैं, this 1, 2, 3. The refractive index of these 3, that is N1, is given to you as 1.39, right? N2 is given to you as 1.47, and the last one, N3 का refractive index, the third ray का refractive index given to you as 1.52. Now they're asking you, for which of these rays
get internally reflected and which get only refracted from AC. इन रेज में से कौन सी ऐसी रेज है जो इसमें से TIR करेंगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट होंगी, और कौन सी ऐसी रेज है जो रिफ्रैक्ट कर जाएगी, रिफ्रैक्ट मीन्स इमर्ज कर जाएगी. And trace the path of the rays. You have to trace it also and justify your answer with the help of necessary calculation. और कैलकुलेशन करके आपको दिखाना है. तो ये क्वेश्चन जब आया था, एक कलर के साथ आया था, रेड ब्लू ग्रीन कलर के साथ. ये जिस साल NCERT बोर्ड के एग्जाम में आया था CBSE, उसी साल ये नीट में भी आया था. सो इट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन सोचते हैं. मेरी TIR की कंडीशन क्या थी? TIR की कंडीशन ये थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन व्हाट द क्रिटिकल एंगल. तो तुमने थ्योरी पढ़ी, उसी को अप्लाई करो. क्रिटिकल एंगल TIR के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, द कंडीशन इज व्हाट, I is greater than IC. क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन लगा देते हैं. सो दिस विल बी योर साइन I ग्रेटर देन व्हाट, साइन IC. करेक्टली लगा दिया. और मुझे पता है साइन IC किसके बराबर है, साइन IC इज इक्वल टू 1/n. ये 1/n के बराबर होता है. So we can write it as sin IC is equal to, it's greater than, not equal, greater than 1/n. इसको लगा दिया. So now n should be greater than what, 1/sin I. Cross करते हैं. So for TIR the condition is that n should be greater than what, sin I. Now the thing is that कि जो हमारा रे आ रहा है, ये कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है, that we have to find out. So now you see I will make one ray here. This is a right angle isosceles. दिया हुआ है isosceles right angle. So this ray, these two sides are equal. एक रे को लेते हैं, we take one of the rays. सबके साथ एक ही कहानी. ये रे क्योंकि नॉर्मली आ रहा है तो सीधे यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे आके इंसिडेंट होगा. जब ये इंसिडेंट होगा तो यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओगे. मैंने पहले क्वेश्चन में भी दिखाया था, ये 90 का है, ये 45 का है, तो ये भी 45 का होगा. Isn't it? ये 45, ये 90, तो ये 45. तो अब ध्यान से देखो बच्चों की एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का आया. See here, this comes out as 45. Why it's 45? Because it is a normal. क्या ये कहानी बाकी तीनों के साथ भी सेम है? जो दूसरी आ रही है क्या ये भी ऐसे ही आएगी? इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितने का होगा, 45. जो नेक्स्ट वाले रे है, सभी रेस की हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितनी है, 45. तो तीनों के लिए एक बात सही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45. I is equal to 45. Correct. So if you put it here, यहाँ put करते हैं तो n is greater than what, 1/sin 45. यहाँ रख दिया. So this will be what, sin 45. All of you know it's 1/√2. That means this will come out as 1/1/√2. This is 1/1/√2. So this will come out as n is greater than 1/1/√2. So n is greater than √2. That means n should be greater than 1.414. अगर TIR होना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, 1.414. अब आप वैल्यू को देखिए, तीन वैल्यूज आपको दी हुई है. जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से ज्यादा है उसमें क्या होगा, TIR. बताइए कौन सा है इससे ज्यादा. These two, you see, इस वाले में और इस वाले में, मतलब 2 और 3 में क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1.414. तो इन दोनों में क्या होने वाला, इन दोनों में TIR होगा. इसमें भी TIR होगा, इसमें भी TIR होगा. किसमें नहीं होगा, इसमें, क्योंकि इस वाले की वैल्यू N1 की जो वैल्यू है वो 1.39 है, which is what, which is less than 1.414. तो यहाँ पे TIR नहीं होगा. TIR is not at all there. So what's there? इसी में क्या होगा, it's going to emerge out because it is less. तो यहाँ पे ये emerge करे, it's going to emerge. So now they're also asking कि आप इसको trace भी करिए, trace the rays. So we are going to do tracing the rays. If you trace this rays, हम figure अलग बनाएंगे because it's a small figure. So I make it. We have to trace the rays. कौन सी दोनों ऐसी है जिसमें TIR हुआ, that is 2 and 3. 2 and 3 में TIR हुआ है, TIR. 1 में क्या हुआ है, 1 में it has emerged out because we have seen the condition. Correct. तो जब इसको ट्रेस करेंगे तो द फर्स्ट में क्या होगा, इमर्ज होगा. इट्स गोइंग कमिंग, इट्स गोइंग टू इमर्ज. इमर्ज मीन्स इट्स गोइंग टू रिफ्रैक्ट, सो इट्स गोइंग टू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इमर्ज हो गया. नाउ कम्स द सेकंड वन, 2. सेकंड, इट विल कम स्ट्राइक हियर
इट्स गोइंग टू अंडरगो व्हाट, TIR. इस पे क्या हो रहा है, TIR. तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो इट्स गोइंग टू हैव TIR. इस पे TIR हो गया. द थर्ड रे, दैट्स अ 3 रे. इसमें भी क्या था, n was greater than 1, this value which we have got 1.414. तो इसमें भी क्या हो रहा था, TIR. So the third में भी क्या होने वाला है, TIR. So it will come here, strike here and TIR. This is your 1, this is 2, this is 3. इन दोनों में TIR हुआ और इस वाले में इमर्ज हो गया. वेरी गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन द फॉलोइंग रे डायग्राम कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता नहीं है और मुझे इस मीडियम में कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड, इस लिक्विड में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस फिगर को आप अच्छे से देखिए, जस्ट सी द फिगर. फिगर में आप देखो ये 40 ये 30 एंड सी दिस रे इज ग्रेजिंग हियर. ये रे क्या कर रहा है, ग्रेस कर रहा है. अगर ये रे ग्रेस कर रहा है तो ये वाला एंगल कौन सा है, क्रिटिकल एंगल. यहाँ पे लिखा भी हुआ दिस विल बी योर व्हाट, द क्रिटिकल एंगल. सो आई कॉल इट एज IC. अगर ये IC है तो क्या ये एंगल भी IC होगा. फिगर में ही देखिए ये एंगल कितने का, ये IC है तो ये भी क्या हो गया, IC. एंड यू नो दैट कि अगर इस ट्राइंगल को देखो, जस्ट सी दिस ट्राइंगल, तो साइन IC की वैल्यू आप निकाल सकते हो फ्रॉम दिस ट्राइंगल. सो इफ यू फाइंड आउट साइन IC, हाउ मच यू विल गेट, साइन IC इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू क्या होती है, इट इज योर perpendicular. Perpendicular is 30 and the base is what, this. So if you see this figure, if I draw this figure, इस फिगर को मैं अलग से ड्रॉ कर दी है. It's not very clear there. So this is the object, this is a ray going, this grazing, ये graze कर रहा है. This is given as 40 centimeter. This is given as 30 centimeter. And this is the critical angle IC. So this is also IC. We can find out from there, IC. अब ये बताइए कि अगर ये इन्होंने लिखा हुआ है CAO, right? So we can find out the hypotenuse. This AO must be equal to what? AO must be equal to root of 40 square plus 30 square, isn't it? So AO must be equal to root of, you know the calculation. This is your 1600 plus 900 will give you how much? Will give you 2500. That means AO will come out as 50. AO की वैल्यू कितनी आ गई, 50 centimeter. This has come out as 50. Right? So now we can find out this. Sin IC की वैल्यू निकाल सकते हैं. Sin IC will be what? Perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is how much? 30. The hypotenuse is how much? 50. So we are going to get sin IC as 3 by 5. Sin IC की वैल्यू आ गई 3 by 5. But they have not asked sin IC. They have asked you that in the diagram find the speed of the light in the liquid. और आपको speed of light निकालनी है. Correct? Speed of light आप सबको पता है that you are going to use what? The Snell's law. आपको Snell's law यूज करना है. तो क्या इस critical angle से आप refractive index निकाल लोगे? तो अगर हम refractive index निकालते हैं, so n is equal to 1 by sin IC. Right? Sin IC की वैल्यू कितनी है? 3 by 5. So n will be your 1 by 3 by 5. That means n will come out as 5 by 3. n की वैल्यू आ गई. जब n की वैल्यू आ गई और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे स्पीड, मतलब इस मीडियम में स्पीड फाइंड आउट करना है. एंड वी नो दैट ये तो एयर है. सो वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, द स्नेल्स लॉ. यहाँ पे हमने यूज किया किसको, TIR के फॉर्मूले को. अब क्या यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, द नेक्स्ट, दैट इज योर स्नेल्स लॉ. सो वी आर गोइंग टू यूज n is equal to sin I by sin R. And that is equal to what? C by V. सब फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे. इसको यूज किया फिर C by V. इसकी मुझे जरूरत नहीं है. I need n is equal to C by V. इसकी जरूरत. करेक्ट. और हमने पिछले में क्या n निकाल लिया. n is how much? 5 by 3. So we put the value. We put the value of n as 5 by 3. This 5 by 3, we have to find out what? The velocity in the medium. This velocity we have to find out. This vacuum में velocity कितनी है? C. So that is your 3 into 10 power 8. So we just put the value. So V will come out as, cross multiply, this will be your 3 by 5 into C. So V will be your 3 by 5. और C की वैल्यू कितनी है? 3 into 10 the power 8. You got the value? इसको कैलकुलेट करने का तरीका देखो बच्चों. इसमें से एक जीरो इसको दे दो. This is your 30 by 5
into 3 into 10 power 7. करेक्ट. अब आप इजीली इसको कट कर सकते हो. 5 को कट करिए 6 आ जाएगा. So the velocity will come out as, this is 3, this is the 6, this is 3, so it will come out as 18 into 10 power 7 meter per second. Got the answer so easily. So we have done a lot of numericals in this refraction and TIR, and I think the concept is very clear to you, because now if you go through the theory in my previous video and then you do the numericals, मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका कंसेप्ट क्लियर होना, थ्योरी उसकी बहुत क्लियर होनी, और फॉर्मूले याद रखना, और न्यूमेरिकल फास्ट करने. राइट. तो मेरे ख्याल से अगर आप इसको रिपीटेड देखोगे तो न्यूमेरिकल्स आपके फर्दर, अगर आप एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करोगे, यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स इजीली. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, क्योंकि वो दोनों टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन में भी न्यूमेरिकल्स आते हैं. राइट. सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी नाइसली इन लेंस एंड प्रिज्म, सो दैट यू कैन डू ऑल द न्यूमेरिकल्स ऑफ रिफ्रैक्शन प्रॉपरली. प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें.